Namaskar, good evening viewers. You are watching Sansad TV and this is House Highlights with me, Rajiv Kumar Singh, where we get you the details of the proceedings of the day in both Lok Sabha and Rajya Sabha. Before we bring you the details, a look at the headlines. 19 opposition members suspended for disruptions in the Rajya Sabha. MPs include 7 from the TMC, 6 from the DMK, 3 from the TRS, 2 from CPM and 1 from CPI. Lok Sabha approves a family court amendment bill. Bill validates family courts in states of Himachal Pradesh and Nagaland. Both houses paid tributes to martyrs of Kargil Vijay Divas. Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu, Lok Sabha Speaker Om Birla praised exemplary courage and selfless dedication of Indian soldiers. Nineteen opposition MPs, including 7 from the TMC and 6 from the DMK, were suspended from attending the sitting of the Rajya Sabha for the entire week for disrupting the House proceedings. The opposition MPs, who have been stalling the proceedings since the start of the monsoon session over price rise and the levy of the GST on daily essentials, were suspended as they did not heed to Deputy Chairman Harivansh's repeated pleas to leave the well of the House and go back to their seats. Minister of State for Parliamentary Affairs V. Muralidharan moved a motion to suspend 10 MPs, but when it was adopted by a voice vote, Harivansh read out the names of 19 members who have been suspended for the rest of the week. The chairman ने फिर सिम कर आना और दिखाना गलत है. प्लीज ये हाउस के रूल्स प्रोसीडिंग के खिलाफ है. वेल में ना आए, अपनी सीट पर जाएं. प्लीज हाउस को चलने दीजिए. प्ले कार्ड लेकर के हाउस में ना आए, ये नियमों के विपरीत है. प्लीज माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं. आई एम रीडिंग, मेरा निवेदन है, अनुरोध है, अपनी सीट पर जाएं. The chairman may, if he seems it necessary, name a member who disregards the authority of the chair or abuses the rules of the council. Having taken a serious note of the misconduct of Mohammad Nadimul Haq, Ms. Dola Sen, Srimati Shanta Chetri, Shri Abir Ranjan Biswas. 7 of the suspended MPs belong to the Trinamool Congress. 6 were from the DMK, 3 from the Telangana Rashtra Samiti, 2 from the CPIM and 1 from the CPI. Deputy Chairman Harivansh said the MPs were suspended for showing utter disregard to the House and the authority of the chair. The question is that the House have taken a serious note of the misconduct of the Susmita Sen ji, Mausam Dev ji, Susmita Dev ji, Mausam Noor ji, Santa Chetri ji, Dola Sen ji, Santanu Sen ji, A.R. ji, Nadimul Haq ji, M.M. Abdullah ji, L. Yadav ji, A. Rahim, Badiraju, Kalam ji, Girirajan. Please, who have entered the N.R. Elango, V. Sivdasan, M. Samukham, Damodar Sandosh Kumar P., who have entered the well of the House and have been continuously shouting slogans, thereby disrupting the proceedings of the House in utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the above mentioned members, that is, mentioned, to be suspended from the services of the council for the remainder of this week under the Rule 256. Protests by opposition members over various issues, including price rise, disrupted proceedings in the Rajya Sabha for the 7th day on Tuesday. Proceedings began at 11 a.m. but were adjourned till 12 noon amid protests led by the opposition parties. Soon after the House met, after the first adjournment in the morning session, Deputy Chairman Harivansh urged protesting members from opposition parties such as Congress, TMC, DMK and AAP to return to their seats and allow the question hour to proceed.
As the members continued with their protest, he adjourned the House briefly for about 15 minutes till 12:20 p.m. When the House met again at 12:20 p.m., Deputy Chairman Harivansh asked about a dozen opposition MPs who were in the well to return to their seats, but they continued protesting and raising slogans. However, the Deputy Chairman decided to move ahead with the question hour. In all, Rajya Sabha took up 7 listed questions during the question hour. So I'm moving to other question. Question number, the time is over. House stands adjourned till 2 p.m. You have put your first... In the second half, further discussion on the weapons of mass destruction and their delivery systems, Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022 could not take place due to continued protests by the opposition MPs. As the Rajya Sabha resumed after the second adjournment, the opposition members continued shouting slogans, ignoring Chair Bhubaneswar Kalita's pleas. Kalita asked the suspended members to leave the House and others to return to their respective seats to take up the official business. However, the opposition members continued with their protests, following which Kalita adjourned the proceedings for the day. On the anniversary of Kargil Vijay Divas, Chairman M. Venkaiah Naidu said that the display of exemplary courage, selfless dedication and unflinching determination towards the mission by our soldiers in treacherous terrain and inclement weather will remain etched in our memory forever. He said that the saga of their unparalleled valor and gallantry will continue to inspire generations after generations to dedicate themselves to the cause of the nation. Today is the 23rd anniversary of the Kargil Vijay Divas. On this day, in the year 1999, our brave and fearless soldiers ousted enemy forces occupying high-altitude peaks of Kargil, resulting in a momentous victory of our country. The exemplary courage, selfless dedication, and unflinching determination displayed by our soldiers in adverse conditions will always be remembered. Their unparalleled valor and gallantry will continue to inspire generations after generations to dedicate themselves to the cause of the nation. Today, on behalf of the whole House, on my own behalf, I pay growing tributes to the indomitable spirit and supreme sacrifices of our brave soldiers who went beyond their call of duty to protect our motherland and secure our lives. I request members to raise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of all those brave soldiers who laid down their lives for our country. We will take a short break and be right back with more session updates. उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 22 जुलाई को नाम वापस लेने के बाद एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा मैदान में रह गए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचन मंडल के सदस्यों के जरिए किया जाता है। निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित और नाम निर्देशित यानी मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 6 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे खत्म होगा। मतदान संसद भवन के प्रथम तल पर स्थित कमरा संख्या 63 में होगा। मतदान की व्यवस्था लोकसभा महासचिव और उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के रिटर्निंग अधिकारी उत्पल कुमार सिंह की ओर से की जा रही है। मतदान के बाद वोटों की गिनती भी 6 अगस्त को ही होगी। Welcome back. This is House Highlights. News now from the lower house of the Parliament. The Lok Sabha on Tuesday passed a bill to grant statutory cover to family courts set up in Himachal Pradesh and Nagaland and retrospectively validate all actions taken by them.
The Family Court Amendment Bill 2022 was passed with a voice vote. Responding to the MPs after a discussion on the bill, Law Minister Kiren Rijiju said that he would request all state governments to set up one family court in every district. आज 26 तारीख है, 30 तारीख को डिस्ट्रिक्ट जजेस का एक कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी रहने वाले हैं, मैं भी रहूँगा और चीफ जस्टिस रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस रहेंगे। उसमें मैं सोच ही रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बार डिस्ट्रिक्ट जजेस को दिल्ली बुलाया है और अभी हमने हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ एक कॉन्फ्रेंस कराया। बहुत अच्छा बात हुआ, बहुत हमने चीज़ों पे फैसला लिया है। तो अभी डिस्ट्रिक्ट जजेस को जब हम बुलाएंगे तो ये फैमिली कोर्ट्स के मैटर और कई जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है, इस पे मैं रोशनी डालने वाला हूँ और सारे प्रदेशों का हमको आकलन करना चाहिए। यूपी में ज़्यादा केसेस पेंडिंग लगेगा, जैसे किसी सदस्य ने, निशिकांत जी ने भी इस बात को कहा कि जनसंख्या इतना बड़ा है तो केस ज़्यादा होगा, वो प्रोपोर्शनेट होते हैं। बेंच दे दीजिए ना। लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट वहाँ फैमिली कोर्ट बने, ये प्राथमिकता हमको रखना चाहिए। और मैं हर एक राज्य सरकार को जरूर फिर से कहूँगा कि भारत के हर एक जिले में फैमिली कोर्ट्स जरूर बनना चाहिए। Initiating the discussion, Sunita Duggal of the BJP said more appointments should be made in family courts so that the cases are resolved expeditiously. BJD MP Bharthari Mehtab too voiced his support for the bill. BSP MP Ritesh Pandey said the government must consider endowing women with greater representation in family court. Members cutting across party lines took part in the discussion. मैं एक देख रही थी इसमें लिस्ट कि अभी भी बहुत से स्टेट हमारे ऐसे हैं कि जहां पर आदरणीय मंत्री जी की नोटिफिकेशन जा चुकी है, लेकिन वहां पर कोई कोर्ट अभी तक नहीं खुली है। इसमें हम देखें अगर अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दीव एंड दमन, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, मिजोरम, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन एक भी कोर्ट यहाँ पर अभी तक खोला नहीं गया। इसके साथ साथ मैं गुजारिश कर रही थी कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे मध्य प्रदेश जो है उससे छत्तीसगढ़ बना, तो मैक्सिमम कोर्ट जो है वो छत्तीसगढ़ की तरफ चली गई और मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही कोर्ट है। तो इसमें यह भी मैं कहना चाह रही हूँ कि मध्य प्रदेश क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, तो वहाँ पर भी अगर नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी हैं तो आपके अगर माध्यम से वहाँ पर कोई अगर लेटर चला जाता है तो वहाँ पर और ज़्यादा संख्या में जो है कोर्ट खुल सकती हैं। देश में करीब 720 कुटुंब न्यायालय में लगभग 11,43,985 मामले लंबित हैं। यह आंकड़ा हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के अतिरिक्त भी है। अब जहां शीघ्र निपटारा की बात है, वहां साल दर साल मामले लंबित होते जा रहे हैं। इस पर सरकार को जल्द विचार करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि करीब 10 लाख की आबादी पर हर जिले में एक न्यायालय की स्थापना इस कानून के तहत होना चाहिए, किंतु बिहार एवं अन्य प्रदेशों में एक जिले की आबादी लगभग 20 लाख से भी अधिक है। मेरा अनुरोध है कि वहां पर सरकार जल्द से जल्द कुटुंब न्यायालय की स्थापना करे। ये लिखा गया है कि न्यायपालिका में इसके सेक्शन 4 में 4B के तहत ये स्पष्ट रूप से लिखा गया, इन सिलेक्टिंग द पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज जजेस प्रेफरेंसेस शैल बी गिवन टू वुमेन। यानी कि जब जजेस को सिलेक्ट किया जाएगा तो एक श्रेष्ठता यानी कि ज्यादा वरीयता जो है महिलाओं को दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि एक हिसाब से लिंग अनुपात महिलाओं का ज्यादा होना चाहिए अगर वरीयताएं दी जाएंगी। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि जो भी जज हैं वो ज्यादातर महिलाएं नहीं हैं। करीब 38 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस प्राविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट ये दर्शाती है कि भारतीय परिवार न्यायालयों में महज न्यायाधीश की कुर्सी पर मात्र 20% से कम महिलाएं हैं। That family court system in the country is not quite in the pink of health, sir. And one of the reasons behind this is the lack of infrastructure, and the second is the shortage of judges and judicial officers at the lower level. The Honorable Law Minister himself
in a reply to a question in Parliament, said that 11.79 lakh cases are pending in 732 family courts, and UP tops with 34% of the cases. It is all happening due to the shortage of family courts, lack of infrastructure in the existing courts, and the shortage of staff, sir. सिविल न्यायालय में सालों साल अटके रहते थे और पक्षकारों को न्याय नहीं मिल पाता। इस परेशानी से निपटने के उद्देश्य से 1984 के अंदर ये आपका बिल आए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 1984 के बाद से अब तक कुटुंब न्यायालयों में समय पर न्याय लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको लेकर आपने क्या समीक्षा की, उसमें क्या सामने आया? क्योंकि स्थापना के बाद लंबे अरसे तक निश्चित तौर पर कई चुनौतियाँ और सुझाव मिले होंगे। आपकी सरकार ने व्यापक सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जो कुटुंब न्यायालयों में पीड़ितों के लिए लाभकारी बने? बच्चों का अधिकार, बायोलॉजिकल एंड लेजिटिमेट राइट, अपने माता पिता दोनों पर होता है, पर जो बच्चा 18 साल की उम्र तक नहीं है तब तक अगर वो वोट नहीं दे पाता, वो जब तक अपना नेता नहीं चुन पाता, और अब तो हम लोग 21 साल भी करने का सोच रहे हैं महिलाओं के विवाह की उम्र, देन सर हम एक 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे को या 10 साल 12 साल के बच्चे को कोर्ट में बुलाकर उनसे जब पूछते हैं कि बेटा आप या बेटी आप किसके साथ रहना चाहते हो, पिता के साथ या माता के साथ, इसका क्या मतलब बनता है सर? बच्चे का तो हक दोनों पर होना चाहिए। हमें किसने अधिकार दिया है कि बच्चे को हम बाप से अलग करें या मां से अलग करें? यह चीज बहुत गंभीर विषय है। Lok Sabha Speaker Om Birla on Tuesday urged the opposition MPs protesting against the price rise and GST hike to take part in the discussion happening in the House, saying that he does not want to take action against any member. As soon as the House assembled at 11 a.m., opposition members trooped to the well of the House, raising slogans and waving placards on the issue of high inflation and GST on some essential commodities. Speaker Om Birla appealed to the members not to disrupt the House proceedings. However, the opposition ignored his appeal. Congress members had walked out of the House and participated in a march to Rashtrapati Bhavan. आपने जो जीएसटी का प्रश्न है वो भी आज लगा हुआ है, उस पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्लीज मैं आपको चाहता हूं कि आप सदन में विराजें। आप सब माननीय हैं, देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद चर्चा संवाद के लिए, तख्तियां नारेबाजी के लिए नहीं है। फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं, इसको देश की जनता देखती है, विश्व की जनता देखती है। सदन की मर्यादा को बनाए रखें। Lok Sabha also took up matters of urgent public importance under Rule 377. स्टेट कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण वहाँ पर जिस प्रकार जो व्यापार है, जिससे उद्योग, पर्यटन, शिल्प आदि से प्रदेश के प्रत्येक जिले से जुड़ा हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि पहले जैसलमेर और जोधपुर ये फ़्लाइटें चालू थी, अभी बंद कर दी गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वापस जोधपुर और जैसलमेर फ़्लाइट्स चालू की जाए। So I request the Ministry of Road Transport and Highway and NHAI through you to kindly consider one-time improvement of these roads, whereby bypass roads are proposed, by including it in the revised DPR in order to provide seamless travel for passengers of Ahmednagar and also avoid accidents or damage to vehicles due to non-maintenance of roads on this stretch. Amid the din, questions related to inclusion of tenant farmers under schemes and forensic investigation were taken up during question hour in Lok Sabha. The annual 61-day fishing ban was brought to facilitate fish breeding and thereby protect fishermen's long-term economic interests. But reports suggest that despite the ban being imposed, there has been a decrease in fish population. Can the minister state whether there has been a study on the efficacy of imposing the 61-day ban in terms of increasing or stabilizing the fish population? It is a scientific advice for conservative and effective management of fishery resources. Sir, this ban is essential to allow regeneration of fish stock, to ensure sustainability and livelihood protection of small-scale farmers and traditional fishermen. So these, because of the fisherman community itself, they voluntarily know that the ban period is necessary. संसदीय क्षेत्र के किसान जो हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड से बहुत ही बेनिफिशियल है, खुश है, लेकिन उनकी एक मांग है
कि जो है किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के समय बैंक द्वारा एक 12 सालाना डॉक्यूमेंट को जांच करने के लिए एडवोकेट को नियुक्त किया जाता है, जिसकी फीस भी ये किसानों को देना पड़ता है, जिसे वह बंद कराना चाहते हैं और इसे ऑनलाइन करने के लिए मांग है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए जब प्रारंभ की, क्योंकि पहले किसान जो सेठ साहूकारों से अधिक ब्याज पर पैसे लेते थे, लेकिन ये योजना जब से शुरू हुई है तो ब्याज छूट के आधार पर योजना प्रारंभ की है, जिसमें किसान से 4% ब्याज वसूल किया जाता है और उसमें वो किसान जो छोटे किसान हैं उनके लिए भी है, जिसमें 1,60,000 रुपये तक किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज भी नहीं देना पड़ता और इसलिए इनके सुविधा की दृष्टि से आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार उनको वो सारी सुविधाएं दी जा रही है। Where Speaker Om Birla paid tributes to soldiers on Kargil Vijay Divas. आज संपूर्ण देश हमारी राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा के लिए भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान की याद में कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध के दौरान कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम के बावजूद अदम्य साहस और अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और विजय प्राप्त की। आज इस अवसर पर हम अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं तथा शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। That's all we have in today's bulletin. For daily updates of the Parliament news, keep watching Sansad TV. Good night.